Hello students, welcome to another English class of SOUMENDRA Math Academy. So students, in the previous class we already completed the second part of the chapter A Tiger in the House. Today we are going to discuss the comprehension of the second part. So let's start. Who are there in this part of the story? Story रो यही part रे किए अछंत किए जेजे बापा आउ मोहम्मद आउ होची टिमोथी आउ ता कंपेनियन माने के टोटो मंकी आउ मनग्रिल पप्पी हैला. इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी देयर आर द ग्रैंडफादर्स आउ के अछंती ना जू रो जो सब सिक्योरिटी माने अछंती. इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी देयर आर द ग्रैंडफादर्स and his cook Muhammad and the employees of Jew and authorities of Jew and Timothy and his two companions Toto Monkey and Mongrel Puppy. Okay, who named the tiger cub and who brought it up? टाइगर कब को किए ना देइथिले आ किए ताको नै के आस्थिले के जेजे बापा नै के आस्थिले जेजेमा ना देइथिले. The grandfather brought the tiger cub and the grandfather and the grandmother named his as Timothy. Okay, what was the diet of the tiger cub? Tiger cub रो diet कौन थिला कौन प्रथमे ताको मिल्क दिया होथिला तापर ताको रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल दियाला. The first diet of Timothy was milk in a feeding bottle and then second diet is raw mutton and cod liver oil. Okay, who were Timothy's companion at home? Timothy रो सांग जेजे बापा घरे किए थिले जे कोन मनग्रिल पफी आ किए थिला होची टोटो मंकी. The two companions of Timothy at home are Mongrel Puppy and कोन टोटो मंकी. Okay, what was Timothy's favorite amusement? How did the writer become Timothy's favorite? टिमोथी रो फेवरेट अम्यूजमेंट कौन थिला आ लेखक टिमोथी रो फेवरेट केमिति ले टिमोथी रो अम्यूजमेंट कौन थिला. द फेवरेट अम्यूजमेंट ऑफ टिमोथी वाज टू स्टॉक एनीवन विथ हिज पॉज. ओके, द ताबरे जेजे बापा टिमोथी रो फेवरेट केम देले के केमी जेतबेले से तांगर आब्रो स्टडीज कंप्लीट करके आसिले घर को टिमोथी को से बुलेइबा को नियंती. इन दिस वे से हेले कौन टिमोथी रो फेवरेट तले कौन लिखिबा. When the grandfather completed his abroad studies and came back to his home at morning, he will go for a walk with Timothy. In this way, he became the favorite of Timothy. Okay, what kind of change came over Timothy when he was 6 months old? Timothy जेतबेले 6 month हैला तार को प्रकार चेंज आस्थिला को प्रकार ना. टिमोथी जेतबेले 6 months ओल्ड रहला से बहुत हिंस्र होई बढ़िला आउ से तांको घर पाखरे थिया गोटे बिलेई बा कुकुड़ा को मारी की खाई दउथला हैला. When the Timothy was 6 months old, he grew steadily and less friendly. से हिंस्र भाबरे आउ कम हिंस्र भाबरे बढ़िला आउ लोकंक सहित आगुर जेंति मिसथिला भल से मिसिला नै. He grew steadily and less friendly. He attacked the hens or the cat nearby him. Okay, grandfather decided to transfer Timothy to a Jew. Why? जेजे बापा काहे के टिमोथी को गोटे जू को पठेबा पई डिसाइड नेले काहे कि ना जेतबेले टिमोथी बड़ होई गला जेतबेले ताऊ 6 मास हैला से हिंस्र हो गला आउ से पाखा करथिया समस्त पशु पक्षी को मारी दउतला. तेणु ताको जेजे बाबा कोन गोटे चिड़ियाखाना को पठाइबा पे डिसाइड कले ना. कोन लिखिबा ताले ग्रैंडफादर डिसाइडेड टिमोथी टू ट्रांसफर टू ए जू बिकॉज when the Timothy was 6 months old, he grew steadily and less friendly and he attacked some animals or someone's pet nearby him. So the grandfather decided Timothy to transfer to a Jew. Okay, where did the grandfather take him and how? Grandfather ताको केमिति ओ कोठी नेले नियरेस्ट जू को नेले कोठी की ताको घर पाखरे थिबा नियरेस्ट जू लखनऊ को नेले.
केमिति ना ट्रेन न गोटे फास्ट क्लास एसी कंपार्टमेंट बुक कले नेले ताले कौन लिखिबा ना ग्रैंडफादर booked a first class AC compartment and take Timothy to कौन कोठी की लखनऊ नियरेस्ट जू ऑफ हिज हाउस एट लखनऊ है ग्रैंडफादर टूक टिमोथी टू द नियरेस्ट जू एट his home at which is from his home which is situated at Lucknow. How? By booking a first class AC compartment. Okay. Do you think Timothy will be happy at the new place? तमें भावुत कि टिमोथी न्यू प्लेस रे हैप्पी थी कहीं कदा भी हैप्पी नथो कारण जिते से हिंस्र हेले भी निज लोकों ऊपर किसी अटैक कर नथला तेणु निज लोक छाड़ी से कदा भी हैप्पी नथो नो वी डोंट थिंक लाइक दैट ओके सो ये थिला तमरो क्वेश्चन आंसर आज ये था ये लेटेस्ट वीडियोटा को एवं लाइक करदे दरकार चैनल सब्सक्राइब करदे दरकार सब सांग मान सहित शेयर करदे दरकार जहाँफल समस्ते उपकृत हो पारे समस्त भिडियोटा पहुँच पार सो थैंक यू स्टे ट्यून बाय बाय।